So this is the question number 11 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic operators in Python. So in this particular question, four options have been given to you, and it has been asked out of these given option which one is a not an assignment operator. तो आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन है इन चारों में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। अगर मैं बात करूं इस ऑपरेटर की, तो इस ऑपरेटर का मतलब क्या है पहले, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो इट वुड बी a इक्वल्स टू a बाय b। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट वुड बी a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन b। इसका मतलब क्या है, a नॉट इक्वल्स टू b, और इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस b। तो नाउ इफ यू एक्सपेंड दिस ऑपरेटर्स यू विल गेट टू नो कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, दिस इज फॉर बुलियन ऑपरेटर, यानी कि आपको क्या चेक कर रहा है, इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। इट विल चेक वेदर टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ऑन द अदर हैंड इस केस में क्या कर रहा है, इट इज कंप्यूटिंग सम वैल्यू, अरिथमेटिक वैल्यूज कंप्यूट करके क्या कर रहा है, उसको फर्दर असाइन कर रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को। सो अदर देन दीज थ्री ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, इट इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। Hence, for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then. Thanks for your time.